तो वहीं मणिपुर के हालात पर कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने रियासत में लोगों से अमन की अपील की है। साथ ही उन्होंने मणिपुर तशद्दुद पर तशवीश का भी इजहार किया। For nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime.